immunization that we give is usually BCG, polio, and hepatitis B. BCG is a vaccine that prevents against tuberculosis. It is usually given on the left upper arm of the baby and usually within a few days of birth, that is 24 to 48 hours or 72 hours after birth. बेबी के हॉस्पिटल से निकलने से पहले ये सब वैक्सीन किया जाता है. BCG is a vaccine wherein हमारा जो ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है वो प्रिवेंट होता है. एंड ये जो अपर आर्म पे हम वैक्सीन डालते हैं ये यूजुअली एक पैक्यूल बनता है, दाना बनता है अबाउट 2 to 3 weeks एंड ये इवेंचुअली बर्स्ट हो जाता है एंड स्कार छोड़ देता है. So this is the universal side because even if parents do not remember later on कि हमने BCG दिलवाया था या नहीं, we usually see the scar on the child's arm and decide that this was given or not. Polio, as you all know, that oral polio drops are given to prevent paralytic polio in your child. Hepatitis B is an infection caused by this virus which damages the liver and causes jaundice and even liver carcinoma, so it prevents that. At 6, 10 and 14 weeks, we usually give a couple of vaccines, which is DPT, that is diphtheria, pertussis and tetanus. Diphtheria is nothing but a tonsilopharyngitis. गले में जो infection होती है वो diphtheria organism की वजह से होती है. Pertussis is whooping cough, काली खांसी, जो अब देखने को नहीं मिलती. बेसिकली बच्चा जब खांसता है ऐसे करके सांस लेता है इस प्रॉब्लम में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है बेबी को. बट थैंक्स टू दिस वैक्सीन दिस इज सीन इन अ वेरी वेरी स्मॉलर नंबर्स नाउ. टेटनस, एज यू ऑल नो, जब भी हमें चोट वगैरह लगती है तो हम यूजुअली टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं. सो DPT इज बेसिकली दैट, द T is for tetanus. Then there is Hib and pneumococcal. Hib is nothing but H influenza B, and pneumococcal vaccine is given at 6, 10, 14, which basically causes pneumonias and brain fevers in children. And these are the most two common organisms that cause all this. So it's very important that you vaccinate your child at 6, 10 and 14 weeks with Hib and pneumococcal vaccine. Rotavirus is another vaccine that is given at the same time. This vaccine basically prevents against the diarrhea that are seen in the first year of life in the baby. ये कुछ वैक्सीन है जो हम 6, 10 और 14 हफ्ते पे देते हैं. देन हमारी वैक्सीन आती है 6 मंथ पे. 6 मंथ पे देने गिव हेपेटाइटिस एंड पोलियो. हेपेटाइटिस बी का 3rd शॉट होता है, पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है. देन एट 9 months comes MMR and polio. So MMR stands for measles, mumps and rubella. Measles is khasra, which we know in Hindi. Measles is nothing but fever with a lot of rash on the child's body, with a lot of running nose and drooling saliva and itchy eyes. So ये उसको प्रिवेंट करता है. मम्स इज नथिंग बट गाल सूजी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं. हमारे पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग हो जाती है. सो ये वैक्सीन उससे प्रिवेंट करते हैं. रूबेला इज अगेन अ फीवर विद रैश. सो ये वैक्सीन उसके अगेंस्ट काम करती है. Then at about 1 year of age, hepatitis A vaccine is usually given. Hepatitis A is again a virus which damages the liver cells and causes jaundice. And ये गंदे खाने या गंदे पानी से फैलता है. So उसके अगेंस्ट हम बच्चे को प्रोटेक्शन देते हैं. टाइफाइड का वैक्सीन अब 9 to 12 months में भी दिया जाता है. The next set of vaccines come at about 15 months of age. 15 months पे हम चिकन पॉक्स का, MMR का और न्यूमोकोकल का बूस्टर देते हैं. न्यूमोकोकल वैक्सीन जैसे मैंने पहले बताया और MMR वैक्सीन वही उसी का बूस्टर मिलता है. Along with it चिकन पॉक्स वैक्सीन देते हैं. चिकन पॉक्स, as you all know, is another illness which is caused by a virus, varicella virus. And ये बच्चों में बहुत कॉमनली देखा जाता है, कंटेजियस है. So the moment baby starts going to school and any kid who tends to have chickenpox can be easily transmitted to your child. It's very important that we immunize the child at about 15 months of age. Then 18 months पे हमारा again boosters आते हैं. DPT का first booster आता है along with polio and H influenza B का booster. The next set of vaccines then come at 5 years of age. DPT का second booster देते हैं, chickenpox का second booster देते हैं, MMR का booster मिलता है, and then at 10 years of age we usually give TT, tetanus toxoid का booster. And nowadays the recommendation is that we give DT, diphtheria का थोड़ा सा part and tetanus at 10 years of age, along with another vaccine in adolescent girls, which is human papilloma virus vaccine, which prevents against cervical carcinomas later on in life. So this is in short the immunization schedule.